Hey everyone, welcome back. So in this video, we are going to discuss the scope and significance of macroeconomics. You already know that in the last video, we've already covered the meaning of macroeconomics and the difference between micro and macroeconomics. So this is going to be the second part of your first chapter, Introduction of Macroeconomics, where we will be understanding the scope and significance of macroeconomics. So let's get started. So when we talk about scope of macroeconomics, it's nothing but the area of study. That means what all things we study under macroeconomics, right? So macroeconomics में हम जो भी सारी चीजें पढ़ते हैं, that is the scope of macroeconomics. In macroeconomics, you'll study about the estimation of national income and related aggregates. So under this, you'll learn how to calculate national income and what are its related aggregates. ठीक है, national income कैसे calculate की जाती है और उसके aggregates क्या क्या है, वो सारे concepts आप इसमें पढ़ेंगे. जैसे GDP क्या होता है, NDP क्या होता है. There are many more terms like net national product, gross domestic product, gross national product, net domestic product. So there are so many related aggregates that you are going to understand under macroeconomics. So under macroeconomics हम एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल डिटरमाइन किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. इन दिस कंटेक्स्ट केंसियन थ्योरीज ऑफ नोटेबल सिग्निफिकेंस. हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी एम्प्लॉयमेंट की, बट केंसियन थ्योरी is one of the best theory which has explained the causes of unemployment. Also it has suggested the possible remedies to combat unemployment. So इसमें हर एक चीज बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके क्या रीजंस है, उसके कॉजेज क्या क्या है और किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम किया जा सकता है, क्या पॉसिबल हम रेमेडीज ले सकते हैं टू कम्बैट इट. ये सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. इसलिए केंसियन थ्योरी इज वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी propounded by Keynes. So next we learn about the theory of money under macroeconomics. So theory of money explains the credit creation by commercial banks and how supply of money is regulated by the central bank. So under this theory of money, you'll be understanding the functions of commercial bank and central bank of a country. Now next, under the scope of macroeconomics, we study the theory of general price level. Now how the price level of different goods and services are determined and what is inflation and deflation. You are going to understand everything under this theory of general price level. So inflationary gap कब create होता है, deflationary gap कब create होता है, inflation क्या होता है, deflation क्या होता है, ये सब चीजें आप theory of general price level में पढ़ेंगे. What else do we study under macroeconomics? The role of the government. Okay, so when we are talking about the role of the government, so the major role government is playing is to formulate the budget of a country, right? So here we will be understanding about budget. What is a budget? What are the major components of budget? And how government budget impacts the level of economic activity in the economy. So we understand all of this under macroeconomics. Now next point is exchange rate and BOP. So macroeconomics में आप exchange rate के बारे में पढ़ेंगे. Exchange rate क्या होता है? What are the different types of exchange rate? How exchange rate is determined? Balance of payment क्या होता है? Under balance of payment we have one more term, BOT, that is balance of trade, which is basically a statement of our export and import. So we will be learning all of that under macroeconomics. Okay, now if I briefly explain the scope of macroeconomics, we can say that it is the specialized branch of economics which focuses on the issues such as how an economy functions, how it can be managed, or how the social welfare of the citizens can be maximized. I hope it is clear now.
Now let's discuss the significance of macroeconomics. So what does the significance means? It means the importance of macroeconomics. So macroeconomics हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी importance क्या है, उसकी significance क्या है. Now these following points will be highlighting the significance of macroeconomics. The first point is description of the economy. So study of macroeconomics offers the deep description of our economy. It helps us to understand our economy in a better way. How does it help us? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको हमारी इकोनॉमी को अच्छे से समझने में हेल्प करता है. किस तरीके से हेल्प करता है? बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो मेजर इकोनॉमिक इश्यूज है उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, राइट. लाइक स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कॉम्बैट किया जा सके, कम किया जा सके, ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं. नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट होती है, व्हाट आर द डिफरेंट methods to estimate national income, different sectors से कितनी national income generate हो रही है, what are the nature and level of economic activities are there in the economy. ये सब चीजें हम macro economics के थ्रू पढ़ते हैं. macro economics में जैसे हमने स्कोप में डिस्कस किया, हम गवर्नमेंट बजट के बारे में भी पढ़ते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी जिससे हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से रेगुलेट करती है, राइट. नाउ द सेकंड पॉइंट सेज इट्स द रोड मैप ऑफ growth and development. So of course macroeconomics basically offers the roadmap of growth and development. How it offers the roadmap of growth and development? क्योंकि इसमें हम मेजर इश्यूज पढ़ रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना है हमारी इकोनॉमी में, कहाँ से पैसा जनरेट होता है इकोनॉमी के अंदर, कहाँ कहाँ हम गवर्नमेंट पैसा लगाती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं. सो बेसिकली इट हेल्प्स अस टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विच आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी की क्या क्या नीड है और हमारी इकोनॉमी के पास क्या क्या रिसोर्सेज है. मीन्स से मतलब है रिसोर्सेज. सो इकोनॉमी के पास क्या क्या रिसोर्सेज है और इकोनॉमी की क्या क्या नीड है, उस चीज को देखते हुए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज फॉर्म करते हैं कि हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जा सके, राइट. So the next point is economic stability. So study of macroeconomics helps to achieve economic stability. So how it helps us to achieve economic stability? Through its monetary and fiscal policies. Now what are monetary and fiscal policies? This also you will be understanding under macroeconomics. Let me give you a brief description here. So monetary policies are the policies framed and regulated by central bank, whereas fiscal policy is also known as government policy or budgetary policy. So through these two tools, macroeconomics helps us to achieve the economic stability. Next point is balance of payment status. So macroeconomics also help us to understand the performance of the economy in relation to the rest of the world. What do we study under balance of payment? That कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, कहाँ कहाँ हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट कितना है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, ये सब चीजें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है राइट नाउ, हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, ठीक है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ BOP विच शोज आवर capacity to export and our compulsion to import, right? Now next point is problem of poverty and environmental pollution. So as we have already discussed that macroeconomics में हम एक इकोनॉमी के सारे major issues के बारे में पढ़ रहे होते हैं. So this is one of the major issue of our economy, the problem of poverty and environmental pollution. So macroeconomics offers us the insight of these problems and we address these problems through macro models only. Okay, so these इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम मैक्रो मॉडल्स का ही यूज करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगेन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, policy formulation. So it also helps us to formulate policies, right? So how it helps us to formulate policies? Because it
gives us information related to macroeconomic variables like aggregate demand, aggregate supply, what is the total consumption and investment level in the economy, what is the total output of different sectors of the economy. So हमको ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक से पता चलती है, जो कि बहुत ही यूजफुल है to formulate the policies of growth and development for a country. So this was about the significance of macroeconomics. That's it for today. I hope everything is clear now. So if you have any doubts, you can ask in the comment section. If you want me to explain any particular topic, please mention it in the comment. Hope you're liking my videos. If you're liking my videos, please hit the like button and subscribe to my channel so that you can get the updates of all the videos coming up.